हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न गुरु क्लासेस। आज हम लोग एक्सरसाइज 2C का रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 15। तो हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हम लोग क्वेश्चंस को पहले एनालाइज करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा इक्वेशन सुटेबल रहेगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, एंड अल्टीमेटली वी विल कम टू द सॉल्यूशन। तो इस वीडियो के बाद हमेशा की तरह आप लोगों का कंसेप्ट होगा पूरा क्लियर। सो विद दिस नोट लेट्स बिगिन आवर क्लास। Question number 8 is a train is moving with a uniform velocity of 90 km per hour. It is brought to rest by applying the brakes, which produces a retardation of 0.5 meter per second square. Find the velocity of the car of the train after 10 seconds, and the second one is time taken by the train to come to rest. Okay, so a train is already moving with a velocity of 90 km per hour and comes to rest by applying brake. Okay, so this produces a retardation of 0.5 meter per second square, that is acceleration is minus 5 meter per second square. Okay, so you are to find out the velocity after 10 seconds. Okay, and time taken by the train to come to rest. Okay, so initial velocity over here, since the train is continuously moving at a velocity of 90 km per hour, so initial velocity over here is 90 km per hour. Okay, and the final velocity as it comes to rest is obviously 0, right? So you are asked to find out the velocity after 10 seconds, that is when after 10 seconds, after a lapse of 10 seconds, what is the velocity of the train, final velocity of the train somewhere at the middle of the track. And the second is time taken by the train to come to rest, means when it comes to the final position at rest, what is the time taken by the train. Okay, so the possible equations that are given over here is v equal to u plus at, v square equal to u square plus twice as, and s equal to ut plus half at square. Now which equation is suitable for us? तो v equal to u plus at हम लोगों को provided है final velocity when the velocity after 10 second if we are to find out. So final velocity we have to find out, initial velocity is 90 km per hour, acceleration or retardation is given as 0.5 meter per second square, and time taken is 10 seconds. So the first equation is suitable to solve this entire sum. Okay, so let's see, initial velocity यहाँ पे 90 km per hour है, तो you are to convert it into meter per second, right? So convert सभी को पता है, 90 किलोमीटर मतलब मीटर होगा into 1000 मीटर, divided to convert it into second you are doing 60 second into 60 seconds. So you get the initial velocity as 25 meter per second. Okay, तो आगे बढ़ते हैं, velocity after 10 second, तो final velocity you are to find out, and initial velocity is already given as 25 meter per second. Acceleration over here it's retardation, so acceleration will be minus 0.5 and time is 10 second, right? So you are getting the final velocity as 20 meter per second. तो एक चीज़ यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। इसका सिग्निफिकेंस है कि द ट्रेन इज़ रिटार्डिंग, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ओके, नाउ यू आर टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द टोटल टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कम टू रेस्ट। ठीक है, तो कम टू रेस्ट मतलब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा मेरा 0, इनिशियल वेलोसिटी तो है ही 25 मीटर पर सेकेंड, जब वो स्टार्टिंग से 25 मीटर पर सेकेंड है, एंड एक्सेलरेशन इज ऑलरेडी इट्स रिटार्डेशन दैट इज minus 0.5. So putting these things in the formula we get the time as
50. Question number 9 is a car travels a distance 100 meter with a constant acceleration and average velocity of 20 meter per second. So, you are to find out the final velocity acquired by the car is 25 meter per second, and you are to find out the initial velocity first and acceleration of the car second. Okay. So, the car travels a distance of 100 meter with a constant acceleration that you are to find out, and average velocity is given as 20 meter per second. It is also given that the final velocity that is acquired by the car is 25 meter per second. Okay. So, we do not know the initial velocity that you are to find out and also the acceleration of the car. ठीक है. तो यहाँ पे acceleration और initial velocity निकालना है, but we are given with one information, that is average velocity is 20 meter per second. So, we know that average velocity is u plus v by 2, that is initial velocity plus final velocity divided by 2. ठीक है. So, final velocity is given to us, so we can easily find out the initial velocity, that is given as 15 meter per second. ठीक है. नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ऑफ द कार. तो देखो ऑलरेडी हम लोगों के पास फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू है, इनिशियल वेलोसिटी जो अभी हम लोगों ने निकाला है 15 मीटर पर सेकेंड इज द इनिशियल वेलोसिटी. ओके, एंड डिस्टेंस पता है. Okay, so which formula will be suitable? The second that is given here, that is v square equal to u square plus twice as. So, from here we can easily find out the value of the acceleration. So, putting all these values in the formula, we get the acceleration as 2 meter per second square. Question number 10, when brakes are applied to a bus, the retardation produced is 25 centimeter per second square and the bus takes 20 seconds to stop. Calculate initial velocity first and second is distance travelled by the bus during this time. तो एक बस है, okay, so it comes to rest, okay, and it takes 20 seconds to come to rest, and the retardation that is produced due to the rest position is 25 centimeter per second square. So, here as it comes to rest, final velocity will be 0 and you are asked to find out initial velocity of the bus and the distance travelled by the bus. ठीक है. तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन सुटेबल रहेगा? ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन विल बी सुटेबल बिकॉज फाइनल वेलोसिटी ऑलरेडी वी नो दैट इट इज 0. ओके, इनिशियल वेलोसिटी that we have to find out, acceleration or retardation is 25 centimeters second square, that is already given to you, and the bus takes 20 seconds to stop, that is time is also given to you. Okay. So, once we find out the initial velocity of the bus from this particular equation v equal to u plus at, next term will be to find out the distance. So, from this equation if we can s equal to ut plus half at square, if we use, we can easily find out the distance because initial velocity, time and acceleration we already know. Okay, so let us proceed with the sum. So, v equal to u plus at, v is 0, initial velocity we have to find out, retardation is 25 centimeter per second square. So, mind it, you have to convert it into meter per second square. So, 1 meter equal to 100 centimeters. So, converting this you get the retardation as 0.25 meter per second square. Okay. So, initial velocity comes as 5 meter per second. Next is to find out the distance that you can easily find out. So, initial velocity is 5, time taken for the bus to come to rest is 20 seconds plus half, acceleration is minus 0.25 into time taken is 20 square. So, finally, you get the distance as 50. Question number 11 is a body moves from rest with a uniform acceleration and travels 270 meter in 3 seconds. Find the velocity of the body at 10 seconds after the start.
तो कोई एक कार है मान लो, फ्रॉम रेस्ट पोजिशन से it has started and it is traveling with a uniform acceleration for a distance of 270 meter in 3 seconds. ठीक है. Now again the car, okay, you are to find out the velocity of the car at 10 seconds after the start. ठीक है. So the available formula जो है हम लोगों के पास ये है. So find the velocity of the body at 10 seconds after the स्टार्ट. तो जो पहले जो है डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है. तो यूजिंग दिस information or these values, if we can find out the acceleration, because initial velocity is 0 over here, right. So we can easily find out the acceleration from this equation, and if we find out the acceleration from this equation, then using the value of the acceleration we can find out the फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकलेगा, और टाइम बोला है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, तो इनटू 10 टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड हो जाएगा. तो वैसे हम लोग निकाल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी. तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं सम को. तो डिस्टेंस एट 3 सेकेंड इज 270 मीटर. ओके, तो एक्सेलरेशन यहाँ से पुटिंग दिस वैल्यूज ओवर हियर वी गेट द एक्सेलरेशन एज 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ द वी गॉट द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन. नाउ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एट 10 सेकेंड विल बी v इक्वल टू, you are to find out initial velocity is 0 over here, acceleration is 60 and time taken is 10 second. So the final velocity we are getting as 600 meter per second. Question number 12 is, a body moving with a constant acceleration travels the distances 3 meter and 8 meter respectively in 1 second and 2 second. Calculate initial velocity and सेकेंड इज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. तो ये क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझो. एक कार सपोज मान लेते हैं, तो द कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर इन 1 सेकेंड एंड अगेन डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर इन अनदर इन 2 सेकेंड. ओके, सो यू आर टू फाइंड आउट द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार. ठीक है, तो ये है हम लोगों का सेट ऑफ इक्वेशंस. तो सिंस डिस्टेंस और टाइम दोनों ही मेंशन्ड है, ओके, सो द थर्ड फॉर्मूला हियर विल बी सुटेबल टू सॉल्व. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही हम लोगों को पता नहीं है, दोनों ही निकालना है. ठीक है, तो ये इक्वेशन से कैसे निकालोगे? तो एक तरीका समझना पड़ेगा. तो जैसे हम लोग लीनियर साइमल्टेनियस x एंड y का वैल्यू जैसे निकालते हैं लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन से. ठीक है, तो लेट x बी दिस, लेट y बी दिस. ओके, तो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके निकालते हैं, क्योंकि x और y का वैल्यू दोनों ही मेंशन नहीं रहता है. ठीक वही कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे. ओके, सो मान के चलो लेट इनिशियल वेलोसिटी बी u एंड लेट एक्सेलरेशन बी a. ठीक है, तो फॉर्मूला है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो डिस्टेंस फॉर 3 मीटर इन 1 सेकेंड, तो इफ यू पुट इट इन द फॉर्मूला, डिस्टेंस है 3, u इंटू t1 है 1 प्लस हाफ a जो निकालना पड़ेगा हम लोगों को, और t1 स्क्वायर के जगह 1 स्क्वायर. ओके, सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट दिस इक्वेशन 6 इक्वल टू 2u प्लस a. सो गिव दिस एज इक्वेशन a 1. ओके, नाउ डिस्टेंस फॉर 8 मीटर इन 2 सेकेंड, सी s2 इक्वल टू ut2 प्लस हाफ a t2 स्क्वायर. ठीक है, तो s2 के जगह पे 8, u is the initial velocity that you are to find out, u into 2 plus half a 2 square. So you are getting another equation as 8 equal to 2u plus 2a. Now you solve equation 1 and equation 2. तो solution कैसे करना पड़ेगा ये मैं नहीं बताऊंगी, तो डायरेक्टली मैं आंसर पे आ जाऊंगी. Solving 1 into
2, acceleration comes as 2 meter per second square and the initial velocity comes as 2 meter per second. Question number 13 is, a car travels with a uniform velocity of 25 meter per second for 5 seconds. The brakes are then applied and the car is uniformly retarded and comes to rest in further 10 seconds. Find number 1, the distance which the car travels before the brakes are applied. Second is the retardation. Third is the distance travelled by the car after applying the brakes. ये प्रॉब्लम को हम लोग पार्ट बाय पार्ट समझेंगे. तो एक कार है, ओके, सो इट इज़ ट्रेवलिंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, ओके, एंड टाइम टेकन इज 5 सेकेंड, ओके, टिल 5 सेकेंड इट इज़ मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ओके, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर बोल रहे हैं मीन्स व्हाट, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 होगा. ओके, तो क्या हुआ, आफ्टर 5 सेकेंड वी अप्लाई द ब्रेक्स. ओके, सो आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स द कार मूव्स with a retardation. Okay, and next is you are to find out the first one is you are to find out the distance the car travels before the brakes are applied. Second is the retardation. Third is the distance travel. तो first आते हैं first part में the distance before after which the car travels before the brakes are applied. ठीक है, तो कौन सा इक्वेशन सुटेबल रहेगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हम लोगों का थर्ड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि वो चल ही रहा है 25 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा उसका इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, तो एक्सेलरेशन तो 0 होगा क्योंकि सिंस इट इज़ मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. टाइम फ्रेम है 5 सेकेंड तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे जा रहा है, तो यू कैन फाइंड आउट द distance. Okay, so the distance is 125 meter. Second is the retardation part. The retardation part पे भी we have found out the velocity. Initial velocity is 25 meter per second, क्योंकि चल ही 5 सेकेंड तक उसका इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड था. फिर वो ब्रेक लगाया, फिर स्टॉप में द कार कम्स टू रेस्ट, तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी विल बी 0. इनिशियल वेलोसिटी इज 25 मीटर पर सेकेंड. टाइम when it comes to rest is 10 seconds. So putting all this we get the acceleration as 2.5 meter per second square. Third is the distance travelled by the car after applying the brakes. Okay, so after applying the brakes matlab we will be applying this equation v square equal to u square minus twice a s, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड पे जा रहा था. एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन ऑलरेडी वी हैव फाउंड आउट टू बी 2.5 एंड कैन फ्रॉम दैट वी फाइंड आउट द डिस्टेंसेस 125. Question number 14 is, a spacecraft flying in a straight course with a velocity of 75 km per second fires its rocket motors for 6 seconds. At the end of this time, its speed is 120 km per second in the same direction. Find the spacecraft's average acceleration. Second is distance travelled by the spacecraft in the first 10 seconds after rocket motors were started, the motors having been in action for only 6 seconds. ठीक है, तो फर्स्ट है इसका रोटर, द स्पेसक्राफ्ट इज फायर्स is moving with a initial velocity of 75 km per second and it fires its rocket motors for 6 seconds and then it becomes final velocity becomes 120 km per second. So first is you are to find out the spacecraft's average acceleration. तो फाइनल वेलोसिटी है,
इनिशियल वेलोसिटी है और टाइम ड्यूरेशन जो है 6 सेकेंड के लिए. सो विद इन दैट टाइम द स्पेस क्राफ्ट हैज़ बिल्ट इट्स एक्सेलरेशन because final velocity is more than the initial velocity. So you will be using the first equation. Okay, so putting all these values in the formula, we get the acceleration as 7.5 kilometer per second square. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्पेसक्राफ्ट इन द फर्स्ट 10 सेकेंड. तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल फॉर 10 सेकेंड जो है तो that can be splitted up into distance traveled for 6 seconds because the motors had already been action for 6 seconds, means at that time the velocity or the acceleration was developed. After that it was moving with a velocity of 120 kilometer per second for the rest 4 seconds. So you are to find out the distance traveled for 6 seconds and the distance traveled for 4 seconds. So the distance traveled for 6 seconds s equal to ut plus half at square if you apply. तो s equal to initial velocity 75, 6 सेकेंड के लिए 75 into 6 plus half, the acceleration developed is 7.5 kilometer per second square into 6 square. So you are getting the distance travelled as 585 meter for 6 seconds. Now distance travel for another 4 seconds, just apply the formula. S equal to 120 is the velocity that it was travelling with. So that becomes the initial velocity into 4, that is 480 meter. So the total distance covered for 10 seconds is 1065 meter. Question number 15 is a train starts from rest and accelerates uniformly at a rate of 2 meter per second square for 10 seconds. It then maintains a constant speed for 200 seconds. The brakes are then applied and the train is uniformly retarded and comes to rest in 50 seconds. Find the maximum velocity reached. Second is the retardation in last 50 seconds and the third is total distance covered. Okay. So first is the maximum velocity reached. तो पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते हैं. सपोज A to B पॉइंट में क्या है, ट्रेन स्टार्ट किया है रेस्ट से. सो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, राइट, एंड इट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली. एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 10 सेकेंड. ठीक है. आफ्टर दैट सपोज फ्रॉम B to C it maintains a constant speed for 200 सेकेंड. तो कांस्टेंट स्पीड फॉर 200 सेकेंड मतलब एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे 0 है, ये सबको पता है, राइट. Now the from point C, okay, the brakes are applied and the train is uniformly retarded and comes to rest for 50 seconds. तो क्या है यहाँ पे retardation है 50 in 50 seconds. लास्ट 50 सेकेंड पे रिटर्डेशन हो रहा है. ओके. सो पार्ट बाय पार्ट निकालते हैं क्वेश्चन को. फर्स्ट है मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड. ठीक है. तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे v इक्वल टू u प्लस AT. तो ये समझो. देखो A से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है. ठीक है. B तक इसने क्या किया है, एक्सेलरेट किया है. मतलब B से मतलब A से B तक एक फाइनल वेलोसिटी रहेगा. फिर जो B टू C जाएगा सेम वेलोसिटी पे वो मूव कर रहा है. जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी पे मूव कर रहा है. दैट फ्रॉम C टू D उस वेलोसिटी से फिर 0 पे आ गया है. तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना रीच हुआ है, सो दैट यू कैन फाइंड आउट यूजिंग दिस फॉर्मूला. सो फाइनल वेलोसिटी इज what? You have to find out initial velocity is 0, acceleration is 2 meter per second square and time taken is 10 seconds. So from that you are getting the final velocity as 20 meter per second. ठीक है. सेकेंड है रिटर्डेशन इन द लास्ट 50 सेकेंड. तो रिटर्डेशन इन द लास्ट 50 सेकेंड मतलब वही v इक्वल टू u माइनस AT यूज़ करके ही करेंगे क्योंकि रिटर्डेशन है माइनस आएगा. तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि B से C तक वही 20 मीटर पर सेकेंड पे जा रहा है. फिर C से D तक इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड.
final velocity since the train is coming to rest, it is becoming 0. ठीक है, so put all these things in the formula और time frame जो जब train rest पे आ गया है that is 50 second. So using this you are getting the retardation as 0.4 meter per second square. Next is the टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड. तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल के लिए हर एक पॉइंट पे पार्ट पे हम लोगों को कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो निकालना है. तो ए से बी का पॉइंट मान लो. सो ए से बी का पॉइंट हम लोगों को एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है एंड इनिशियल वेलोसिटी सिंस इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी इज 0 ओवर हियर. सो यूज दिस फॉर्मूला एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो यू मतलब 0 है, t तो मतलब 10 सेकेंड, हाफ into 2 that is acceleration is 2 into 10 square. So you are getting the distance from A to B as 100 meter. Next now B to C. B to C पे it is travelling with a velocity, uniform velocity of 20 meter per second. Time is 200 second. तो just S equal to V into T है ना, V इक्वल टू एस बाई टी. तो रिप्लेस करके S इक्वल टू V इंटू टी. तो वी आर गेटिंग द वैल्यू एस that should be 4000 meter. Okay, by mistake I have written 400 meter, that will be 4000 meter. So you are getting the distance as 20 into 200, that is 4000 meter. ठीक है. Next is from C to D. From C to D initial velocity is 20 meter per second. It is coming to rest, so that is 0. Time is 50 second. So use this formula S3 equal to ut plus minus half at square. Retardation है 0.4 in the final C to D. So putting this you are getting the distance from C to D as 500 meter. So sum up all these 100 plus 4000 meter plus 500 meter. So you will be getting the total distance as 4600 meter. Thus we come to the entire problem solving part of exercise 2C. तो hopefully आप लोगों को सारा प्रॉब्लम समझ में आया है और फटाफट से आप लोग बाकी कोई भी प्रॉब्लम को टैकल कर पाओ. तो इस वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी समझ में आया है concepts को, please subscribe to Learn Guru classes, like and share it with your friends and family. So thank you so much. Bye bye.